Hello everyone. Very good evening to all of you. This is Ashwin Ramani, your research analyst at SAMCO Securities. I hope I am audible and I hope you all are able to see my screen. If you all can give me a heads up in the chat box. Uh, अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे चैट बॉक्स पर हाय हेलो करके बता सकते हो ताकि मुझे पता चले कि आप इस लाइव सेशन में प्रेजेंट हो. So you can just give me a heads up guys in the chat box. लहेरी जी saying audible. ओके, स्वागत करता हूँ आपका इस मनी विद रमनी यूट्यूब लाइव सेशन में. आज के सेशन में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस. विद्या जी है यहाँ पे. गुड इवनिंग. So we just I see that people are joining in, so we just wait for a minute or so before we start off with the session. Sachin ji, hi. Engineering Tech ji saying yes. Okay, super. So screen is visible. Uh, Shreya ji is here as well. Great. So, how's the training going on, guys? I think last 6 days markets are experiencing profit booking. So many news, so many events have happened in the last 1 week or so. Rajesh ji saying hello, hello Rajesh ji, good evening to you. So कैसा चल रहा है आपका ट्रेडिंग? कैसा लग रहा है आपको ये प्रॉफिट बुकिंग देख के? So if you all can just let me know in the chat box. Are you all trading at this point of time और क्या आप बस अब मार्केट के बाहर बैठे हो देख रहे हो कि ये फॉल कहाँ तक जा सकता है, कब एक दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले, या आपने ऑलरेडी कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके रखे हो और आप ये फॉल को एक एज अ अपॉर्चुनिटी देख रहे हो अच्छे स्टॉक्स में एंटर होने? सो हाउ आर यू ऑल लुकिंग एट द मार्केट्स? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. देन we'll quickly go through the निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस. आपको मैं डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स दिखाता हूँ कि उसमें क्या चेंजेस हुए हैं लास्ट 1 वीक से, और कहाँ तक गिर सकता है. वेयर इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी? इट्स आइडली आई फील द ओवरऑल अप ट्रेंड इज स्टिल इंटैक्ट. इट्स जस्ट दैट अभी एक प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. अब कहाँ तक गिरेगा बस वो एक अंदाज लगा सकते हैं और एक ऐसा होप लेके चल सकते हैं कि शायद मार्केट ये लेवल को रेस्पेक्ट करे. सर मार्केट एसएल लेके जाता है. आई थिंक दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेडिंग. एज लॉन्ग एज यू कीप योर स्टॉप लॉसेस स्मॉल, एज लॉन्ग एज यू नो कि आपका जो रिस्क है इट इज बेस्ड ऑन आपका रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप चल रहे हो, आई थिंक यू शुडंट बी वरीड मच अबाउट दी स्टॉप लॉसेस योर, बिकॉज आई थिंक एवरीवन, सबका ऐसा होता ही है ट्रेडिंग में कि उनका एसएल लग ही जाता है. तो कितने भी बड़े ट्रेडर हो, आई थिंक यू कैंट एस्केप लॉसेज योर. बट हाँ, देर आर सम मार्केट्स वेयर आई थिंक शायद लास्ट 2 दिन में, आज इनफैक्ट आपका एसएल हिट हुआ होगा, बिकॉज इनिशियली मार्केट्स वॉज एक आरबीआई रेट कट डिसीजन के बाद जो कि अनचेंज रहा है. उसके बाद एक तेजी देखने को मिली एंड सडनली द मार्केट्स क्लोज डाउन. आई थिंक रेड में हुआ है. विद्या जी इज एडिंग गुड स्टॉक्स. या दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू डू गाइस. अगर आपके पास आपने कुछ अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके रखे जो फंडामेंटली अच्छे हैं, probably you can add in some stocks at this level. Yeah, one other option that you can also see is how many of you all are aware of Nifty Bs guys? If you all can let me know in the chat box. मेहर सिंह पूछ रहे सर कल मार्केट गिरेगा या ऊपर जाएगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. लुकिंग एट द करंट एंड, आई डोंट थिंक मार्केट अब मे बी शॉर्ट टर्म बाउंस नहीं, शायद मार्केट थोड़ा और गिर सकता है लुकिंग एट द क्लोजिंग टुडे. बट देखते हैं, लेट्स एनालाइज, लेट्स सी क्या सपोर्ट लेवल्स है और हम क्या ट्रेड ले सकते हैं आने वाले दिनों में. आइडली आई डोंट सी कुछ बड़ा गैप अप हो अनलेस देर इज सम पॉजिटिव न्यूज दैट कम्स इन. आई थिंक इलेक्शंस का भी रिजल्ट आ गया है. आई थिंक बीजेपी वन इन हरियाणा. आई थिंक एनसी एंड कांग्रेस दे वन इन जम्मू कश्मीर. आई थिंक दैट वाज वन फैक्टर दैट वाज प्लेइंग आउट. आज का इंटरेस्ट रेट जो अनचेंज रहा है, दैट वाज वन न्यूज़ दैट मार्केट्स वाज eagerly looking at.
एंड ऑब्वियसली जो ईरान इसराइल के बीच में जो काफ़ी टाइम से चल रहा है मिडल ईस्ट में, तो उसके वजह से एक नीजक रिएक्शन तो आया ही है मार्केट्स में। प्लस चाइना ने उनके इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए काफ़ी अच्छा स्टिमुलस दिया था, एंड मेजरली जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, जो लगातार इंडिया में अब पैसा लगा रहे थे, हो सकता है कि थोड़ा पैसा अब चाइना में मूव हुआ हो, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक एफपीआईज विल स्टार्ट कमिंग इन इंडियन मार्केट्स एज वेल। सो दिस इज ऑल्सो वन फैक्टर दैट इज प्लेइंग आउट। बट हम एफपीआई के डेरिवेटिव डेटा भी देखेंगे। अगर आप देख रहे हो कैश मार्केट में एफपीआईज लगातार रोज बेच रहे हैं यहाँ पे, और अगर आप इंडेक्स फ्यूचर्स भी देखोगे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिन्हों वो जो लॉन्ग पोजीशन था, जो हमने लास्ट अक्टूबर 1 को जो लाइव सेशन किया था तभी हमने देखा था कि एफपीआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशो 81% है। कैन यू गेस वो लॉन्ग शॉर्ट रेशो अब कहाँ पे आ गया? सो जो 81% था लॉन्ग शॉर्ट रेशियो, आई थिंक सितंबर के एंड पे 81 पॉइंट समथिंग लॉन्ग शॉर्ट रेशियो चला गया था। अगर आप लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को एक्टिवली ट्रैक कर रहे हो कि एफपीआईज के पास कितने लॉन्ग पोजीशंस है अब इंडेक्स फ्यूचर्स में कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशंस, एनी गेसेस गाइस, व्हाट इज द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो एज ऑफ yesterday? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इट विल बी ग्रेट। सो उससे मुझे पता चल जाएगा आप कितने लोग यहाँ पे हैं जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को एक्टिवली डे टू डे बेसिस पे ट्रैक कर रहे हैं, बिकॉज मैं हर लाइव सेशन में आई इंश्योर कि मैं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के बारे में बात करूँ, पीसीआर के बारे में बात करूँ। आई ऑल्सो लुक एट इंडिया विक्स and your open interest. Great. I think Vidya ji is saying 46%. That's right. 43. I think it has come down even lower. It is at 43 as of yesterday. But we'll go through that data. So माहौल कैसा है मार्केट में? आई डेफिनेटली मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग प्रॉफिट बुकिंग। क्लियरली दिख रहा है कि जितने भी लॉन्ग पोजीशंस बने थे मार्केट्स में, देर आर सम लॉन्ग पोजीशंस जो अनवाइंड हुए हैं यहाँ पे। एंड अगर आप निफ्टी की डेली चार्ट भी देख रहे हो, यहाँ पे निफ्टी 50 ईएमए के नीचे क्लोज दिया था। थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप 2024 से ही देखोगे, सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, निफ्टी जब जब 50 ईएमए के आसपास आया है निफ्टी, तब तब वहां से एक अच्छा बाउंस दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देर वॉज निफ्टी अराउंड 20 मार्च को 50 ईएमए के पास आया था, यहाँ से बाउंस दिया था। अप्रैल को फिर से 50 ए में आया था, बाउंस दिया था। फिर मई को फिर से 50 ए में तक आया था, बाउंस दिया था। जून में जो अपना इलेक्शन का रिजल्ट डेट था, उस दिन 50 ए में के नीचे क्लोज देके वहां से एक बाउंस दिया था। यहाँ पे आप देखोगे अगस्त में फिर से 50 ए में तक आया था और बाउंस दिया था यहाँ पे। तो जब जब निफ्टी 50 ए में के आसपास आया, तब तब तक एक बाउंस देखने को मिला है। बट अब हम क्या देख रहे हैं? कल ऐसे ही हुआ था। कल यहाँ पे एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना भी था आफ्टर दिस फॉल, जो कि हाई बनाया था 26277 का। और वहाँ पे आप देख रहे हैं निफ्टी जो गिरा था 24,750, ये 50 एमए के 2 दिन नीचे क्लोज हुआ है। कल एक बुलिश हरामी पैटर्न बना था, और आज के फर्स्ट हाफ में ऐसा लग भी रहा था कि निफ्टी 50 ईएमए के ऊपर क्लोज देगा। सो देयर वाज सम मोमेंटम पिक कर रहा था निफ्टी, ऐसे लग रहा था। बट अगर आप देखोगे एंड ऑफ द डे में एक शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न बना है। दिस इज नॉट अ टेक्स्ट बुक शूटिंग स्टार। यूजली शूटिंग स्टार हम एक अच्छे अप ट्रेंड के बाद देखते हैं, बट दिस इज लाइक अ शूटिंग स्टार पैटर्न हियर। यहाँ पे आप देखोगे मोमेंटम पकड़ा था, क्लोज होने भी वाला था 50 एमए के ऊपर, बट इवेंचुअली जस्ट थोड़ा मार्जिनली ऊपर क्लोज हुआ है 50 एमए का। तो थोड़ा सा वीकनेस का साइंस क्लियरली विजिबल है निफ्टी में। सो शॉर्ट टर्म ट्रेंड bearish, but I think the long term trend is still intact. So ideally in this market, what I would do as a trader is to find out कि next support कहाँ पे हो सकता है, और शायद मुझे next buying opportunity कहाँ पर मिले। I mean this is what I would do, because though the overall trend is still up, maybe थोड़ा सा अभी एक weakness नजर आ रही है। Immediate trend is bearish here. So that is what, this is how I'm looking at Nifty. What is your view on Nifty, guys? If you all can let me know in the chat box. क्या लग रहा है आपको? आप bearish हो निफ्टी में, कि आपको लग रहा है कि नहीं, शायद ये कल से फिर से एक बाउंस दे सकता है? सो हाउ आर यू ऑल लुकिंग एट निफ्टी? इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स। एक ही अगर आप देखोगे लास्ट 3 दिन से 50 एमए के वहीं पर घूम रहा है। 50 एमए के नीचे क्लोज हुआ था। कल एक बुलिश हरामी कैंडल बना था यहाँ पे, ग्रीन कैंडल। आज फर्स्ट हाफ में ऐसा लग रहा था कि एक अच्छा क्लोजिंग मिले, ये बुलिश हरामी का अच्छा कंफर्मेशन कैंडल होता, बट ये इवेंचुअली 50 एमए के नीचे थोड़ा क्लोज हुआ। इट इज लाइक अ शूटिंग स्टार पैटर्न योर। सो
how are you all reading Nifty, guys? If you all can let me know in the chat box. बेरिश हो क्या आपको लग रहा है? नहीं, आई थिंक ये अब एक तेजी आ सकती है बिकॉज आई थिंक द Q2 रिजल्ट इज अराउंड द कॉर्नर. आई थिंक मार्केट्स विल स्टार्ट टेकिंग क्यूज फ्रॉम दैट एज वेल. सो अभी सबसे पहले आईटी के आएंगे, देन आई थिंक द बैंक्स विल स्टार्ट कमिंग इन. सो आई थिंक दिस मंथ इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ Q2 रिजल्ट्स. Then obviously we have Maharashtra elections also towards probably second or third week of November, so थोड़ा उसका impact हो सकता है markets में. Next support at 24,460 sideways to bearish. Yeah, I think immediate it looks bearish here. Because अगर bullish होता, अगर आज एक अच्छा closing देता तो शायद थोड़ा हम bullish की तरफ जा सकते, but looking at how the price has panned out, I feel थोड़ा और नीचे आ सकता है. So let us look at the long short ratio. Let us see what the derivative data indicator says. जो कि आप देख रहे हो एफपीआई का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो कितना लॉन्ग पोजीशंस है कंपेयर टू शॉर्ट पोजीशंस इन इंडेक्स फ्यूचर्स. यहाँ पे 30 सितंबर को 80.83% था, नियरली अबाउट 81. कल का डेटा अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, आई थिंक 8 अक्टूबर को द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज एट 43% गाइस. So you can see there is a massive unwinding of long positions by the foreign portfolio investors. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने आई थिंक एक आध सेशन लाइव में हमने ये भी डिस्कस किया था कि 80% जो है काफ़ी हाई है. और जब जब ये 80% 75% देखा गया तब तक एफ ने अपना लॉन्ग पोजिशंस को अनवाइंड किया है. और हमने लास्ट लाइव सेशन में ये भी देखा था कि प्राइस ऊपर जा रहा है बट आपका पीसीआर नीचे जा रहा है. सो देयर वाज दिस पीसीआर डाइवर्जेंस दैट वाज आल्सो विजिबल. So I think FPIs have started offloading their long positions. Maybe some funds have moved out of India to China. वो एक possibility हो सकता है. बट FPIs ने अपना लॉन्ग पोजिशंस को अनवाइंड किया है. यहाँ पे आप देख सकते हो चार्ट पर, यू कैन क्लियरली सी 80% से अभी FPIs के पास से 43% लॉन्ग पोजिशंस है और 57% शॉर्ट पोजिशंस है. जो लास्ट वीक तक FPIs लॉन्ग पोजिशंस उनका ज़्यादा था शॉर्ट पोजिशन से, अब एफपीआईज के पास 57% शॉर्ट पोजीशंस है और सिर्फ 43% लॉन्ग पोजीशंस है. सो वन ऑफ द रीजन फॉर दिस फॉल इज, एंड आई ऑलवेज से दिस इन ऑल द लाइव सेशंस, कीप ट्रैकिंग लॉन्ग शॉर्ट रेशियो ऑन अ डेली बेसिस गाइस. बिकॉज ये डेटा आपका सुबह हम ट्रेडर्स डैशबोर्ड जो आता है हमारे सैमको के टेलीग्राम चैनल पर और हमारे सैमको के मोबाइल ऐप पर, वहाँ पे मैं डेली अपडेट करता हूँ आपका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो क्या परसेंटेज है. सो यू विल एटलीस्ट नो कि क्या चल रहा है, व्हाट इज दी एफपीआई इज डूइंग इन इंडेक्स फ्यूचर्स. आपको एक अच्छा एक सेंस मिल जाएगा कि मार्केट कौन से दिशा में जा रही है एट दिस पॉइंट. सो लॉन्ग शॉर्ट रेशो आप क्लियरली देख सकते हो, इट इज गोइंग डाउन, इट्स एट 43%. तो एफपीआई के पास अभी ज़्यादा शॉर्ट पोजिशंस है एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजिशंस इन इंडेक्स फ्यूचर्स. नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंडिया विक्स, अगर मैं सॉरी इफ आई टॉक अबाउट द पुट कॉल रेशियो, अगर हम देखेंगे अक्टूबर सीरीज के स्टार्ट में आपका जो पुट कॉल रेशियो था 1.25 था. दिस इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ पुट राइटर्स बाय द कॉल राइटर्स. तो जितना ज्यादा पुट राइटर्स अगर ज्यादा है कॉल राइटर्स से तो आपका पीसीआर दैट मीन्स इट्स अ बुलिश साइन. बट अगर आपका पुट राइटर्स कम है कॉल राइटर्स से, इट इज अ बेरिश इंडिकेशन हियर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट, नॉट द पुट कॉल रेशियो वॉल्यूम का. अगर आप पुट कॉल रेशियो भी देखोगे यहाँ पे, सो लेट मी गो टू द राइट हैंड साइड ऑफ माय स्क्रीन. ये 1.2 से ये भी गिर गया यहाँ पे एंड इट हैज कम डाउन टू नियर अबाउट 1.031. सो अगर आप देख रहे हो पुट कॉल रेशियो का भी अगर आप ट्रेंड देख रहे हो, सो पुट कॉल रेशियो का ट्रेंड भी डाउन चल रहा है. दैट मीन्स पुट राइटर्स है शायद अपना पोजीशंस अनवाइंड कर रहे हैं एंड कॉल राइटर्स आर अग्रेसिवली बिल्डिंग पोजीशंस एट हायर लेवल्स, विच इज अनदर इंडिकेशन कि मार्केट में अभी मंदी चल रहा है. मंदी एज एन आई एम नॉट सेइंग कि पूरा मंदी चल रहा है मार्केट्स में, जस्ट दैट ये जो प्रॉफिट बुकिंग है दैट इज क्वाइट एविडेंट. एंड वन ऑफ द की रीजंस फॉर इट इज जो आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है उन्होंने भारी मात्रा में अपना जो लॉन्ग पोजीशन है उसको ऑफलोड किया है एंड उसका I think the Indian markets is experiencing the impact of FPIs offloading their long positions here. अगर मैं इंडिया विक्स की बात करूं, इंडिया विक्स स्टार्ट ऑफ द अक्टूबर सीरीज में 12 के आसपास था. बट अगर आप 8 अक्टूबर को देखोगे आपका इंडिया विक्स अब चल गया है 14.58 पर. सो यू कैन क्लियरली सी दैट वॉलेटिलिटी थोड़ा सा बढ़ा है, 12 से 14 हुआ है. और हमने ये देखा है कि जब जब आपका वॉलेटिलिटी बढ़ता है दैट मीन्स आपको बुल्स को डिस्कम्फर्ट मिलता है, बेयर्स ऐसे टाइम पे थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं. एंड यू कुड सी वन ऑफ द रीजन फॉर दिस फॉल इज ड्यूरिंग दिस पीरियड आपका जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है इंडिया विक्स है
वो भी बढ़ा है यहाँ पे. सो लेट मी ओपन अप द चार्ट फॉर इंडिया विक्स. तो हम लोग इंडिया विक्स की एक बार चार्ट देखते हैं. इतना नहीं कि ज़्यादा बढ़ गया आपका वॉलेटिलिटी, बट यू कैन सी दैट वॉलेटिलिटी हैज गॉन अप फ्रॉम 12 to 14. ये है आई थिंक. अगर आप देखोगे इंडिया विक्स काफ़ी टाइम से बेरिंग जो हमें एक 5 अगस्त को यहाँ पे हमने देखा था. आई थिंक दिस वाज द बजट डेट इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसके बाद से वॉलेटिलिटी कूल ऑफ हुआ है, बट योर यू कैन सी 25 सितंबर से आपका जो वॉलेटिलिटी ऑलमोस्ट एक 8 के लेवल्स पर आ गया था इंडिया विक्स, और वहाँ से ये 15 तक गया है. सो यू कैन सी इंडिया विक्स हैज मेड अ लो ऑफ 8 एंड इट हैज गॉन टू 15. एंड आपका जब वॉलेटिलिटी बढ़ा है उसी टाइम से हमने देखा है कि मार्केट में ये प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हुआ है. बट एज लॉन्ग एज ये 16.5 लेवल्स के नीचे रहता है इंडिया विक्स, नथिंग टू वरी मेजरली. बट हाँ, इफ इंडिया विक्स गोज अबाउ 16.5, बिकॉज ये 16.5 काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है इंडिया विक्स का, बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, फिर ये तो काफ़ी ऊपर चला गया था यहाँ पे, देन इट केम डाउन अगेन, इट ट्राई टेस्टिंग द 16.5 लेवल्स, नीचे आ गया है. बट आई थिंक 16.5 लेवल्स इज द लेवल दैट यू नीड टू ट्रैक इन इंडिया विक्स. अगेन ये इंडिया विक्स का डिटेल्स भी मैं ट्रेडर्स डैशबोर्ड पे डेली डालता हूँ, सो यू कैन चेक देयर एज वेल. तो अगर आप देखोगे आपका लॉन्ग शॉट रेशियो नीचे गया है, आपका जो पुट कॉल रेशियो है वो भी नीचे गया है. अगर आप इंडिया विक्स देख रहे हो तो द इंडिया विक्स हैज गॉन अप, द वॉलेटिलिटी हैज गॉन अप. एंड लास्टली इट इज़ योर जो आपका जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है. So we started the October series with 1 crore 71 lakh shares. और कल का जो ओपन इंटरेस्ट था, बिकॉज आज का ओपन इंटरेस्ट, आज का बाउ कॉपी जब शाम को आएगा तभी हमें पता चलेगा कि क्या का स्टेटस है. बट वी कैन क्लियरली सी दैट ओपन इंटरेस्ट फ्रॉम 1 crore 71 lakh शेयर्स इट हैज ड्रॉप टू 1 crore 59 lakh शेयर्स. मतलब आपका क्लियरली आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो घटा है. एंड एट द सेम टाइम प्राइस जो 26,216 पर था, अब वो आ गया है 25,013. ये कल का प्राइस है, दिस इज नॉट टुडेज प्राइस, बट वी कैन क्लियरली सी दैट द प्राइस हैज फॉलन. तो जब ओपन इंटरेस्ट गिरा है, एट द सेम टाइम जब आपका प्राइस भी गिरा है, इसको हम बोलते हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग. तो जब when open interest falls at the same time when price falls too, that is the interpretation for that is the longs are getting unwinded. तो जो जो लॉन्ग पोजीशंस बिल्ड हुआ था वो बस अभी कट हो रहे हैं, जिसके वजह से हमें मार्केट में एक डाउन मूव देखने को मिला है. सो इफ आई हैव टू समराइज ऑल द इंडिकेटर्स एट वंस, अगर एक समरी देखना है, तो अगर आप देख रहे हो आपका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, एफ पी आईज हैव अनवाइंडेड देयर पोजिशंस. आपका जो पुट कॉल रेशियो है, जो पुट राइटर्स है वो भी अपना पोजीशंस ऑफलोड कर रहे हैं, और कॉल राइटर्स अपना पोजीशंस बढ़ा रहे हैं. आपका जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है 8 के लो से ऑलमोस्ट अभी 15-14 लेवल्स पर चला गया है, सो आपका वॉलेटिलिटी बढ़ा है. एट द सेम टाइम हम ओपन इंटरेस्ट में क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आपका लॉन्ग अनवाइंडिंग चल रहा है, वेयर आपका ओपन इंटरेस्ट भी गिरा है और आपका प्राइस भी गिरा है. So if we look at all these four derivative data indicators, it is clearly hinting that अभी थोड़ा एक bearish phase चल रहा है मार्केट में. I'm not talking about the overall trend. The overall trend is still up. It's just that हमें देखना है कि ये 50 EMA को निफ्टी रेस्पेक्ट करता है कि नहीं आने वाले दिनों में. Because that closing above 50 EMA is very essential, because हर टाइम जब जब निफ्टी 50 EMA तक आया है, it has given a bounce. अब ऐसा हुआ है कि लास्ट 3 दिन से वो 50 EMA के रेंज पर ही घूम रहा है. So we'll have to wait and see कि whether Nifty close, if Nifty gives a strong close above 50 EMA, chances are that ये जो अप ट्रेंड जो अभी पॉज हुआ है वो शायद फिर से रेज्यूम हो. बट अगर एक 50 EMA के नीचे ही रहता है एंड इफ इट जस्ट ड्रॉप्स अ लिटिल, हो सकता है दिस फॉल माइट इवन कंटिन्यू फॉर सम टाइम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जो आपका फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उनका फिर से इंडियन मार्केट्स में आना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज नाउ दे आर होल्डिंग नेट शॉर्ट्स कंपेयर टू नेट लॉन्ग्स. तो कभी ना कभी वो शॉर्ट कवरिंग करेंगे, शॉर्ट पोजिशंस बढ़ा के. व्हेन दे स्टार्ट कवरिंग देयर शॉर्ट्स, हो सकता है कि जब आपका लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इंप्रूव होगा, शायद आपका जो मार्केट सेंटिमेंट है वो भी इंप्रूव हो सकता है. So these are the four key derivative data points that I wanted to talk. Now let us talk about the key levels for लॉन्ग शॉर्ट रेशो का लिंक शेयर कर दो सर. सो अगर आप एनएससी वेबसाइट पे जाओगे मेहर जी, सो जस्ट गो टू nsindia.com. यहाँ पे ऊपर आपको डेली रिपोर्ट्स दिखेगा. आप जैसे ही डेली रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे, सो ये शाम को 7:30 के आसपास अपडेट होता है ये. सो जैसे आप डेली रिपोर्ट्स पर जाओगे, आपको ये कैपिटल मार्केट डेरिवेटिव्स डेट 3 ऑप्शंस दिखेंगे. यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द डेरिवेटिव्स टैब.
आप जैसे ही डेरिवेटिव्स टैब पे क्लिक करोगे यू जस्ट हैव टू पुट इन द डेट। आप जैसे ही थोड़ा डेट डालोगे यहाँ पे डेरिवेटिव्स पे क्लिक करके यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन आर्काइव्स। जैसे आर्काइव्स पे क्लिक करोगे तो ये कल का डेटा है 8 का। सो जस्ट सेलेक्ट द डेट हियर। जैसे आप डेट पे क्लिक करोगे आपको नीचे जाना है। यू विल सी वन फाइल बाय नेम FNO पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। इसको आपको बस डाउनलोड करना है। आप जैसे ही डाउनलोड करोगे यहाँ से आपको डाउनलोड करना है, ओपन करना है यहाँ पे। और जैसे ये ओपन होगा आपको एक ऐसे एक्सेल शीट दिखेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज दी FII का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। तो आप देख सकते हो फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग सो अराउंड 2,45,000 एंड यहाँ पे इट्स लाइक 3,20,000। तो अगर आप ये दोनों का टोटल करोगे दिस प्लस दिस, ये आपका टोटल पोजीशंस है लॉन्ग और शॉर्ट मिला के। अगर आपको सिर्फ लॉन्ग का परसेंटेज चाहिए जस्ट डू लॉन्ग डिवाइडेड बाय टोटल। इसको आप परसेंटेज कर देना तो वैसे हमें आया 43%। अगर आपको शॉर्ट का चाहिए जस्ट डू शॉर्ट डिवाइडेड बाय टोटल। तो इससे आपको आ जाएगा शॉर्ट परसेंटेज। इसको आप परसेंटेज कर देना यहाँ पे। सो योर वी कैन सी 43% इज द लॉन्ग पोजीशन, 57% इज द शॉर्ट पोजीशन। तो आप ऐसे डेली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यू डोंट हैव टू कैलकुलेट डेली। मैं ट्रेडर्स डैशबोर्ड में डेली ये लॉन्ग शॉर्ट रेशो कैलकुलेट करके मेंशन करता हूँ यहाँ पे। इज दैट पार्ट क्लियर मेहर जी? सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। तो आपको FPIs का, DIIs का, क्लाइंट का और आपका जो प्रोप्राइटरी डेस्क है विच इज़ लाइक प्रो यहाँ पे जो लिखा है, सो चारों का डिटेल मिल जाएगा। बट यहाँ पे जो हम जो की डेटा जो देखते हैं वो FPI का एक्टिविटी ट्रैक करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो योर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो नाउ लेट अस मूव टू द 5 minute चार्ट। I think I saw a few people mentioning some levels here, 25,350, 25,550. Samruddhi ji is mentioning, I think ऊपर भी मैंने 24,200, SKG saying 24,000. Okay, interesting. So there are some few levels. I hope you all can see 5 minutes chart on my screen. सो ये है मेरा निफ्टी का 5 minutes चार्ट यहाँ पे। अगर आप देखोगे जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो दिख रहा है निफ्टी के 5 minutes चार्ट पे, यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे हैं। लेट मी जस्ट चेंज द कलर फॉर दिस। ओके, सो हियर यू कैन सी जो डाउन साइड में yeah, we can say that Sanjay ji is saying if we interpret this, then the market is still sell on rise. Ideally, yes, until Nifty gives a strong close above 50 EMA. Because अगर 50 EMA के ऊपर अच्छा close होता है, then हो सकता है it will go up. But unless and until you don't get a strong close, I think the sentiment will still remain bearish. और हमने ये भी देखा है कि जब जब लॉन्ग शॉर्ट रेशो 50% के ऊपर है, FPI का सपोर्ट जब तक नहीं दिखता है मार्केट्स को, तब तक थोड़ा साइडवेज टू बेरिश भी रह सकता है। आई थिंक फॉर द मार्केट्स टू गो अप यू नीड active participation by the FPIs as well. Though I know for a fact that the retail traders have become more stronger than before. I think that a lot of DIs are also sitting pretty heavily on cash. But हमने देखा है कि जब FPIs पैसा निकालती है we can feel the tremors, and जब FPIs पैसा डालती है मार्केट में we see a good moment in Nifty as well. So we need that FPI support when it comes to trading an index. But immediate level में keep a track on 50 EMA. I feel if we get a good close above 50 EMA, we might see Nifty going up again. लास्ट 3 दिन से हेजिटेशन दिख रहा है मुझे। आज भी 50 EMA के ऊपर क्लोज हो सकता था बट वो सेकेंड हाफ में नीचे आ गया एंड वी सॉ प्रॉफिट बुकिंग ऑन इंट्राडे एज वेल। So I can see some hesitation amongst the bulls here, but I think the bears are still stronger in Nifty at this point of time. And it's the same with Bank Nifty as well. So we'll discuss that. तो यहाँ पे there were some key levels that I had marked here for Nifty. अगर आप देखोगे Nifty में the important support level that I'm looking at, I think मैं दूर वाला levels तो नहीं दूंगा, but I'm just looking at जो immediate strong support level क्या हो सकता है निफ्टी के लिए। आई थिंक दैट लेवल विच कम्स टू माई माइंड इज 24,750। अभी निफ्टी 25,019 में क्लोज हुआ है बट अगर वाई 24,750 इज बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे पिछले टाइम जब बाउंस आया था निफ्टी में दैट वाज नियर अबाउट 24,750। अब ये जो गिरा था हाई से जो मार्केट जो फॉल हुआ था अराउंड आई थिंक नियरली अबाउट 5-6%, 5% का फॉल था यहाँ पे। सो यू कैन सी अगेन 24,750 में सपोर्ट लिया था निफ्टी
एंड इट वेंट अप अगेन। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ निफ्टी ने 2 बार 24,750 के आसपास सपोर्ट लिया है यहाँ पे, एंड राइट नाउ इट इज एट 25,019 एंड वी कैन क्लियरली सी दैट एक लोअर हाई फॉर्मेशन हमें दिख रहा है 5 मिनट्स चार्ट पर। So you can see there is this high, there is this high, there is this high. This high is also lower than the previous high और अब फिर से नीचे आया है। So जो immediate support level है which I feel you all can also track is 24,750 level, because यहाँ पे निफ्टी ने 2 बार सपोर्ट ले चुका है। हो सकता है फिर से 24,750 आए, अगर बाउंस होता है तो गुड। इफ 24,750 टूटता है तो हो सकता है वी माइट सी इवन मोर डाउन मूव इन निफ्टी गाइस, बिकॉज उसके नीचे जो सपोर्ट है वो काफी नीचे आ रहा है आपका। बिकॉज उसके बाद आपका आइडियली इफ आई एम लुकिंग एट द डेली चार्ट हियर, लेट मी गो टू द डेली चार्ट, let me just reset the chart here. So here you can see this is the level that I was talking about, 24,750, एंड ये एकदम 50 एम ए के जस्ट नियर अबाउट 50 एम ए के रेंज पर है। अगर ये लेवल टूटता है आपका बाई चांस, तो हो सकता है ये जो आपका प्रीवियस लो है इट माइट इवन गो टू एंड इट माइट इवन क्रैक 1,000 पॉइंट्स। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1,000 पॉइंट्स क्रैक होगा ही, आई एम सेइंग इट्स अ पॉसिबिलिटी इफ Nifty breaks 24,750 levels here, because that is the immediate support level that I'll be tracking. 24,750 में ये देखूंगा कि यहाँ से हमें बाउंस अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो आई माइट टेक अ चांस देयर। अगर नहीं, अगर 24,750 टूटता है एंड आई कैन सी दैट द लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज इवन डेटोरेटिंग फर्दर, then हो सकता है we might see even more down move from the current levels here. So keep a track on Nifty. I think it's pretty straightforward. 24,750 level on the downside is the level that you should be tracking. But अगर आप 50 MA के ऊपर जाता है, हाँ, so ideally today 50 MA is around 25,050. Yes संजय जी। So we just need a strong close. आज ऐसे लग रहा था एक अच्छा क्लोज मिलेगा बट हुआ नहीं। So I'm just reading the price action today. We saw good bounce but then eventually intraday में एक profit booking दिख गया था। सो कीप अ ट्रैक ऑन निफ्टी। इमीडिएट सपोर्ट इज एकदम दूर वाले लेवल्स मत सोचना अभी। आई थिंक द इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी इज अराउंड 24,750 एंड दैट इज द लेवल दैट यू नीड टू ट्रैक। तो इसका हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ, सो इफ आई एम लुकिंग एट 24,800 गाइस, ये कल का एक्सपायरी है। सो निफ्टी 10 अक्टूबर एक्सपायरी। maybe if you are already holding PE प्रेम जी, I think maybe you can, आई होप कल गैप अप ना हो। अगर गैप अप होता है तो शायद इट माइट स्पॉइल योर पार्टी, बट आई थिंक द ओवरऑल सेंटिमेंट इज बेरिश इज व्हाट आई फील लुकिंग एट द प्राइस एक्शन, लुकिंग एट द डेरिवेटिव डेटा। वो कुछ साइंस दिख नहीं रहे अब कि ये करंट लेवल से बाउंस मिले हमें। बट अगेन वी नेवर नो, हो सकता है हम 5 बजे सेशन क्लोज करें और कुछ ओवरनाइट न्यूज आ जाए एंड टुमारो वी माइट सी अ बिग गैप अप इन निफ्टी, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट्स आर अनप्रेडिक्टेबल। So if we look at 24,800 guys, so 24,800 में put writers है, 900 में भी put writers है। So at this point of time I feel 24,750, 24,800 levels एक strong support बन सकता है निफ्टी के लिए। So keep a track on that guys, because if अगर 24,750 break होता है, we might see Nifty moving uh, even more down from the current levels. But अगर ये 50 MA के ऊपर close देता है, which is 25,050 संजय जी, I think we might see a good bounce. Maybe we can see some short term bounce here. I'll talk about that as well, Vidya ji. So I hope the Nifty's part is clear, 24,750. Now let's look at Bank Nifty guys. So let me open up Bank Nifty's chart on my screen. So what are your views on Bank Nifty guys? If you all can let me know in the chat box, because अभी हमने निफ्टी का देख लिया है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे क्लियरली एकदम वीक लग रहा है यहाँ पे, because again if you see a similar pattern in Bank Nifty, it gave a close below 50 MA on 3rd October, 4th October, 7th October, 8th October एंड 9th अक्टूबर। 5 दिन लगातार 50 MA के नीचे क्लोज दिया है यहाँ पे। बट ऐसे पिछले टाइम भी हुआ था थोड़ा, आई थिंक नियर अबाउट 5th अगस्त को इट वाज कंसोलिडेटिंग बिलो 50 MA। काफ़ी टाइम वो कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, बट हियर यू कैन क्लियरली सी दैट एक फॉल के बाद थोड़ा सा बुल्स ने यहाँ पे कोशिश की मार्केट को ऊपर लेके जाने की, बट अगेन इवेंचुअली यहाँ पे आप देखना एक इंट्राडे फॉल आ गया है। सो आई थिंक द स्ट्रक्चर इज लुकिंग
weak in Bank Nifty as well. So what are your views on Bank Nifty? Premji is saying 51 200 P hold. ग्रेट आई थिंक आपने आईटीएम पी होल्ड करके रखा है ग्रेट आई थिंक प्रेम जी के पास निफ्टी का भी पी है और बैंक निफ्टी का भी पी है विच इज गुड ठीक है व्हाट अबाउट अदर्स गाइस इफ यू ऑल कैन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स हाउ आर यू ऑल लुकिंग एट बैंक निफ्टी इफ क्या लग रहा है आपको वेयर इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी इफ यू ऑल कैन लेट मी नो बिकॉज निफ्टी का हमने देख लिया इट इज 24,750 बट आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है सो दिस इज द डेली चार्ट आई थिंक यहाँ पे मेरे को क्लियरली एक सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी पे इफ यू ऑल कैन लेट मी नो हाउ आर यू ऑल रीडिंग बैंक निफ्टी एंड व्हाट डू यू थिंक कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है बिकॉज दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी लुकिंग एट द प्राइस एक्शन लुकिंग एट द डेरिवेटिव डेटा इट्स बेरिश सो बैंक निफ्टी का लेवल्स इफ यू ऑल कैन लेट मी नो in the chat box 5200 Arun ji is saying 5200 okay interesting Vidya ji is saying 50,500 interesting 50,500 here 51,900 52,050 DAB is acting correct so if we can clearly see that आज ये 50 EMA तक आया था but again 50 EMA is acting as a resistance here I think Bank Nifty is pretty much similar so we have seen but we have also seen Bank Nifty going below 50 EMA and consolidating यहाँ पे देखना 50 EMA के नीचे आया consolidated then it moved up it took support here it took support here it took support it took support it took support again it went down consolidated for a brief period went up again it came down took support here and it went up but ये वाला fall this time when it broke 50 EMA I think it looks like it has broken with force here 5700 5500 great because what I feel is if you look at the daily chart I think you can see there are multiple supports around this level which is around your 50,300 zones guys so अगर आप देखोगे the this bounce was from 50,300 zones this bounce was near about 50,300 year to bank nifty it jumped from 5,300 if I go to 5 minutes chart here I think you can see 5 minutes chart pretty clearly uh, we got a good bounce from around 50,300 level 5,300 5,330 so it's not like roughly around 5,300 मैं बस एक जोन बता रहा हूँ 5,300 to 5,330 और let me just zoom in for you so here if I look at the 5 minutes chart guys so here we can see bank nifty took support here then there was support 2 there was support 3 uh, then you can see recently bank nifty ये जो fall हुआ था it took support around the same levels here so this is the level that I am tracking in bank nifty which is 50,000 so you can see there are multiple supports here around 50,000 yeah 50,300 yes Sanjay ji so I think 50,300 is the level that you should be tracking in bank nifty uh, I think my only worry is I hope ऐसा ना हो because अगर आप देखोगे 50,300 if by chance bank nifty takes out 50,300 on the downside maybe the next immediate support level would be around 49,700 so here you can see I'm talking about this support here so let me just draw out the support यहाँ पे so this can probably be the next support for bank nifty so this is somewhere around 49,700 if 5,300 gets taken out but by chance imagine if this level also gets taken out there is probably the next support lies in जो August 5th का जो low है probably the next support is near about 46,000 here so I hope we see a bounce here if not if this level gets broken out by any chance 49,700 हो सकता है we might see bank nifty cracking even further but I think more than 49,700 I would say it's 50,300 is the level that you should be tracking in bank nifty so 50,300 in bank nifty 24,750 in nifty these are the two key levels
So let me open up Bank Nifty's option chain. So let us see what the option chain shows for 50,300. So this is Bank Nifty here. Let me go to 16th October. So this is 16th October. So if you see 50,500 as good put writing, even 50,000 as good put writing, but if you see at this point of time 50,300 में put writers बैठे हैं. So this is for the next week's expiry, which is on 16th of October. But just like how 24,750 में put writers बैठे थे निफ्टी में, वैसे ही 50,300 में भी put writers बैठे हैं. Yeah, I think if Bank Nifty falls, that will drag the Nifty down as well. Probably they get support from IT and auto, तो हो सकता है वो fall इतना देखने को नहीं मिलेगा. But I think Bank Nifty looks weaker, guys. I think 5300 is the level that you should be tracking in Bank Nifty. So these are the two key levels, guys. So 24,750 Nifty, 50,300 in Bank Nifty. I think those are the two key levels that you need to monitor. I think Vidyaji was asking me about mid cap and small cap. I think mid cap and small cap have been positive. Uh, I think it's the large caps that are pushing the markets down. But if you look at mid cap has closed above 50 EMA. A very strong closing yesterday on 8. आज एक 50 EMA के ऊपर क्लोज दिया है. I think the same is with small cap as well. Uh, but small cap hasn't closed above 50 EMA. So Nifty is below 50 EMA, Bank Nifty is below 50 EMA. If I look at Fin Nifty is also below 50 EMA. If I look at small cap is also below 50 EMA. I think the only index that is above 50 EMA is your mid cap index. So at this point of time, I feel mid cap looks stronger than any of its peers here, whether it's Nifty, Bank Nifty, small cap, etc. So I think सिर्फ mid cap Nifty अभी bullish लग रहा है. But I think rest all but I won't say it is convincingly bullish, because even if you look at mid cap Nifty, I think the story is pretty much similar to Nifty and Bank Nifty. First half it was good, but then intraday जो profit booking दिखाई दिया, so this is not a very convincing candle. It's like more of a shooting star candle here. So इतना convincing candle दिख नहीं रहा है mid cap पे. But in order to sum up, sentiment is bearish. The data indicators is all pointing towards bearishness. So ideally, look for some opportunities near about the support zones, 24,750 Nifty and 5300 in Bank Nifty, and pray that these support levels aren't broken, because हो सकता है अगर ये support level break हो, because उसका जो नीचे वाला support level वो काफी नीचे है, हो सकता है this down move might prolong for a bit. And I think अभी Q2 results आना start होगा, so I think markets will start taking cues from there. And we have the big Maharashtra elections coming up in the second half of November, but we also have Diwali in between. And these are probably the two big events that are lined up in the next 1.5 months. Uh, so I think Maharashtra is a pretty big election, and also I think Q2 results will probably drive the market mood. And I think Iran and Israel, I think Middle East tensions, I think that will keep. And I think December may we'll also have US elections, so we might see some impact of US elections on Indian markets too. So I think these are some three key events that are lined up for the rest of the year. So this was about Nifty and Bank Nifty analysis, guys. If I hope now you are aware of the levels. If you have any questions, guys, do let me know in the chat box. So I have 5 more minutes. We can just do a small Q&A. If you have any questions, you can let me know, guys, in the chat box. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. So I'm waiting for your queries. अगर कुछ questions है, if you want to ask anything, you all can let me know.
But how many of y'all have been attending my live sessions regularly, guys? If y'all can let me know in the chat box, because we do these live sessions every Wednesday at 4 o'clock. If Wednesday happens to be a holiday, then we do it at Tuesday. So every Wednesday we do this Nifty and Bank Nifty analysis where we talk about what is happening in Nifty and Bank Nifty. We talk about the derivative data indicators, and we also look at some key levels to track for the upcoming trading sessions. Dixon target, great. I think Dixon has been in a good momentum since last few days. Let me open up Dixon's chart. I think the key for it is Sanjay ji. I think the most important is whether all the indices close above 50 MA. I think that is to be seen, and how these indices behave around 50 MA is the big question now. Dixon looks very good, Rohit ji. I think, and you can clearly see that Dixon B, every time it has come to 50 MA, it has, it has gone up. So I would say don't have a fixed target in mind, Rohit ji. इसमें क्या करना है? It's better is when the stock is in momentum, keep trailing your stop losses. So if the price goes up a little, trail your stop loss. If it goes up even further, trail your stop loss. That way you will always ride the trend. ऐसा नहीं होगा कि चलो अभी ठीक है मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉफिट आ गया बुक कर लिया एंड देन यू विल रिग्रेट सेइंग अरे होल्ड करना चाहिए था ये तो और ऊपर चला गया. So ideally when you see that you have bought something and that stock is in momentum, it's okay, keep trailing the stop loss. uh, I think that is the right approach. uh, it's okay even if you keep trailing your stop loss. हो सकता है one of cases में आपका stop loss trigger हो फिर से ऊपर जाए, but that way you might never book small profits. You might you chances are that you will always ride the trend here. So I think keep doing that, keep trailing the stop losses because there are no visible targets in the short term. So जितना ऊपर जाता है जो previous day का low है वहाँ पे आप stop loss रख सकते हो and just keep riding the trend. ठीक है. If you have any other queries, guys, do let me know. My says even though midcap is above, but it is still a resistance zone, and I think today's candle closing is not very convincing. I think it went up and then we saw correction here, and chances are that uh, uh, RBI might go for a rate cut in December. Today the interest rates were unchanged for the 10th time in a row. Lairi ji saying premium energy. Okay, let me open up. Okay, it's taking some time to load. Anyone here who has added Nifty Bs in this fall? If you all can let me know in the chat box. Which stock is this premium energy? I think I don't find any stock like this. Premium energy, or is there some other stock that you are talking about? I don't see this stock. I think maybe if you can just give the name of the stock, Lairi ji, it will be great. I mean, did you? HCL is consolidating, making flat pattern. Yeah, I think HCL is. But I think if you can, HCL Tech is good. Yeah, I think if this resistance gets taken out around 1830, because here you can see there are multiple resistance here, 1830, 1830, 1830, and 1830 here. So I think if 1830 gets taken out, I think that will be a very good level. I think Premier. I think if you just have to give me the symbol name here.
Hello sir, today attended your class due to I hope your boss is not observing that Sergeant ji. I think आपका Rohit ji saying I bought Nifty Bs yesterday. Good. I think it's a good thing for long term. I think if someone can give me the symbol name for Premier Industries in the chat box. Uh, Premier, okay. I think you are talking about this one. Acha, no, then it's fine. I think then your boss will be cool with that. Great. I think Premier Energy is 1077. I think what we can do is we can probably have a Fibonacci retracement. This is the daily chart here. And this was the whole up move. In fact, it's very good, guys. So here, if you see, I think, हाँ, so here you can see यहाँ पे the whole move यहाँ पे हमें 61.8% Fibonacci retracement मिला था and near about that same level we see a morning star like pattern here. So I think you can still enter into that stock. I think this still looks good, Lahiri ji, because this is like the golden Fibonacci ratio, Premier Energy, right? सो अगर लहरी जी आप देखोगे दिस वाज अ वेरी गुड लेवल 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट और यहाँ से ऊपर गया है मे बी अगर ये भी एक ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है मे बी देन चांसेस आर दैट ये और ऊपर जा सकता है सो दिस लुक्स गुड लहरी जी रोहित जी और सेम ओके ग्रेट विनोद जी ओके आई जस्ट टेक अ लास्ट स्टॉक योर ये देखो मेरे विनोद जी आपका नाम टाइप कर दिया साउथ बैंक के जगह में सो योर आई हैव टू टाइप साउथ बैंक South Indian Bank. Let's see South Indian Bank. Oh, it's in a downtrend. विनोद जी यहाँ पे आप देख रहे हो द साउथ इंडियन बैंक एक लोअर हाई फॉर्मेशन में आ रहा है this this high is lower than the previous high, this high is lower than the previous high. You can see it is in a lower high formation, so I'll what I can we can do is we can just probably draw a trend line like this. So you can see this trend line is coinciding with the 50 EMA. So जब तक ये 24-25 के ऊपर जाता है हो सकता है this can go up. Yeah, it needs to break. HCL Tech needs to go above. It's been like consolidating here. It needs to go about 1830. I think that is a good level to enter for it. ठीक है साउथ इंडियन बैंक आई थिंक 24-25 तक रुक जाओ विनोद जी बिकॉज एक तो डाउन ट्रेंड में है 50 एमए के नीचे है और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है आई थिंक वहाँ से एक अच्छा तेजी मिल सकती है ठीक है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड गाइस आई होप इट वाज अ प्रोडक्टिव 45 मिनट सेशन so that's all from my end see you all next week next Wednesday at 4 o'clock and happy Dasara to you all in advance guys yeah you can hold if you're already holding विनोद जी आप होल्ड कर सकते हो uh, because I think nothing much to worry or it's just that a momentum के लिए it needs to go above 50 है ठीक है that's all from my end guys see you all next Wednesday at 4 o'clock happy Dasara to you all in advance see you all next week guys have a profitable trading week ahead bye guys take care and stay safe